Hello guys, welcome back to the SkillsTechy. So in the last session, we have gone through arithmetic operations, which includes addition, subtraction, multiplication and division. So we have already learned about the addition and subtraction part, although we have also included multiplication and division. But there are some other operations we can perform in the Python. Like for example, flow division. We can also calculate the flow division part, modulus or remainder part, and also exponential. So we'll continue from where we left in the previous video, that is tutorial 5. Now we try some we try to write some piece of code regarding flow division, modulus or remainder or exponential part. So let's start. So it is very simple equation. You can see here we have flow division is 1 because the division is 1.2, so the flow division will be round off the division value. So that is why if we have to calculate some round off possibilities in any arithmetic equations, so we'll calculate the flow division for that part. Okay, as I mentioned, like we have another function called modulus or remainder, so we'll also include that. But modulus and remainder are used to calculate the percentage part. Let the if we divide that 9 by 7, it will give us the remainder of 2. That is how we calculate the modulus or remainder in Python. Let's move to another function. That is exponential. To calculate the exponential part, we use double asterisk. So this is how it works. Now let's try to write some complex equation. So guys, आप लोगों ने मैथ में एक टर्म पढ़ा होगा, बोर्ड मास, दैट बोर्ड मास रूल. सो वैसे ही सेम हमारे पाइथन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रेसिडेंस यूज़ होता है. सो जिसको हम पैडमास भी कहते हैं. तो पैडमास मीन्स पैडमास which is known as that P stand for parenthesis. Parenthesis means this, and E is exponents. Same, M is multiplication, then addition, then subtraction. So we use Python operator precedence if we have to do some, if we have to calculate some complex equation. So we use the Pedmas rule, or we can say precedence rule. So let's take example. पहले ये पैरेंथेसिस को सॉल्व करेगा, जो भी ब्रैकेट में है. तो लेट्स से 5 हमारा ब्रैकेट में है, तो ये पैरेंथेसिस पहले सॉल्व करेगा. देन एक्सपोनेंट में कोई अगर एक्सपोनेंट वैल्यू है तो उसको सॉल्व करेगा. उसके बाद हमारा डिवीजन पे जाता है 4/2, एंड देन ये हमें मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट पे लेके जाएगा. उसके बाद एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन. सो एज यू कैन सी ये हमें 14.0 दे रहा है. इससे 4/2 अगर ये देता है तो
ये क्या आता है हमारे पास आउटपुट देखो 2.0 आता है। सो अगर हम पेडमास रूल की तरफ से इसको वर्बली सॉल्व करें तो इसमें देखो 4 5 20 और यहाँ पे हमारे पास उसके बाद ये पैरेंथेसिस ओपन होगा तो 4 5 20 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास उसके बाद सीधा डिवीजन पे आ जाएगा। सो डिवीजन हमारे पास 4/2 है, दैट गिव्स अस 2। तो हमारे पास क्या है कि 8 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, दैट इज़ -8 + 2 इज़ -6 एंड 20 - 6 इज़ 14। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।